Hello everyone, welcome to session number 5 on vocabulary through roots. हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ रूट्स डिस्कस किए थे इंक्लूडिंग फीलो, टमी, एकस. आई होप आपको वो सारे वर्ड्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगे होंगे. सो आज का हमारा जो ये सेशन है हम लोग उन्हीं के आगे कुछ और रूट्स डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव अहेड विद द रूट्स. सो पहला रूट जो है वो है स्क्रीबो एंड सेकेंड रूट जो है वो है विया. Now let's look at set of words coming from Scribo. If you look at this root, जो पहला word हमारे पास आता है वो है proscribe. Now proscribe is made up of two roots. First is pro, which is before, and second is scribo, which is to write. So what happens when you write before someone? जब आप किसी के आगे लिखते हैं तो आप उस पर्सन को लिमिट करते हैं. सो प्रोस्क्राइब प्रोस्क्राइब का मतलब हो सकता है टू लिमिट समवन और टू इनहिबिट समवन. सो लुक एट द सिनोनिम्स forbid और prohibit. Second word that we get from Scribo is postscript. Now postscript is a piece of text that usually comes at the end of a bigger piece of text or a letter. Now this particular information is pretty important, right? ऊपर शायद आप उसको जगह ना दे पाए हो, इसीलिए नीचे आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में PS लिख के ऐसी इंफॉर्मेशन को मेंशन करते हैं. सो दैट्स पोस्टस्क्रिप्ट फॉर यू. Postscript is again made up of scribo and post. Post का मतलब afterwards, so something that comes at the end of letter or a bigger piece of information, which is important in nature, is called postscript. If you look at the third word, it's called scribble. Now scribble is writing in a hurried manner or writing carelessly. Most probably लकीटे मारना, ये scribble का एक definition कहलाया जा सकता है, right? So writing in a hurried manner or writing carelessly or writing illegibly is scribbling. Scriptures are pieces of texts. They can be religious in nature. For example, जितने भी ये हमारे वेद है ये सारे scriptures में count होते हैं. जितनी भी religious books हैं ये सारी scriptures में count होती हैं. So scriptures are written texts. Next अगर देखें, the word is inscribe. Now inscribe comes from scribo and in. It most commonly refers to engraving. जब आप किसी चीज के ऊपर कुछ लिखते हैं. So those are called inscriptions. And last but not the least is ascribe. If you look at this word, ascribe is assigning or making something cause of something. For example, nations' maladies can be ascribed to the mentality of people. हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि नेशन में कुछ बुरा हो रहा है तो शायद लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं. सो व्हाट वी डिड वाज हमने नेशन में कुछ गलत हो रहा है उसका रीजन क्या है वो बताया. सो हम कह सकते हैं नेशंस मैलेडीज और प्रॉब्लम्स दैट वी ऑब्जर्व in day-to-day society are can be ascribed to how people behave or what thinking they carry. So ascribe is to make something cause of something. इसके जो दो synonyms हैं आपके सामने वो है attribute and assign. So यहाँ पे हमने ये first set of words देखा. Now let's look at the second set of words that come from via. Now via is road. हम लोग इंग्लिश में भी एक word use करते हैं, he is going via this particular route. So via is actually road. English word via is through. So पहला word जो हमारे पास आता है that is viable. Viable is something that can be undertaken, something that can be done. Why? Because it is practical, it can be done easily or it is doable. So इसके जो synonyms है feasible, expedient, suitable, ये कुछ इसके synonyms हो सकते हैं. Suitable or doable or practicable, ये कुछ इसके synonyms हो सकते हैं. If you look at the second word, that is trivia. Now trivia is usually a small piece of information that often goes unnoticed. हमारे बहुत बार हमारे वे में ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जिसके ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते. So those pieces of information can be called trivia. Next जो word है वो है obviate. Obviate is to make something unnecessary. To do away with. एक proverb भी होता है to do away with. वैसे ही हम लोग phrasal verb जैसे to do away with हम लोग use करते हैं. That's obviate. To make something unnecessary. For example, जैसे ही नई गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम लोग नोटरी पब्लिक का रोल जो है वो obviate कर रहे हैं. Now students don't need to go to notary public and get their documents verified. what they generally can do is नीचे self verified करके अपना signature
वहां पे लिख सकते हैं, राइट, सिग्नेचर लगा सकते हैं. सो द न्यू गवर्नमेंट obviated the need to get documents verified from notary public. So obviate was one word to make something unnecessary. Next is trivialities. Now trivialities are petty issues. These are small things that we generally don't pay attention to. But then there are some people who fight on trivialities, right? तो हम लोग क्या बोलते हैं? Stop fighting over trivialities. So trivialities जो हैं, इसका अगर adjective form देखें तो trivial हो गया. एंड यहीं पे इसके जो मैंने दो सिनोनिम्स आपके लिए लिखे हैं, सिनोनिम नंबर 1 इज इनकॉन्सिक्वेंशियलिटीज और सेकंड इज फ्रिवोलसनेस. सो ये दोनों इसके सिनोनिम्स है. अगर आप इनका एडजेक्टिव फॉर्म देखें, इनकॉन्सिक्वेंशियल होगा. इनकॉन्सिक्वेंशियल इज समथिंग नॉट इंपॉर्टेंट और फ्रिवोलस समथिंग नॉट सीरियस, समथिंग ऑफ नॉट सीरियस नेचर, समथिंग नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये दो ट्रिविलिटीज के सिनोनिम्स हैं. तो ये दो सेट ऑफ वर्ड्स हमने कवर किए. Now let's look at the next set of words that come from malice and militus. So ये दो और roots हैं जो हम आज cover करने वाले हैं. Let's look at the words coming from malice. So the first word is malign. Malign is when you defame someone, when you say something bad about when you say something bad about someone, or you sully someone's image. So किसी की image गंदा करना, किसी के बारे में बुरा भला बोलना is malign. इसी का ही नाउन फॉर्म अगर हम देखें तो malignance होगा. Now malignance is something that you speak about, something bad that you speak about someone. That's malignance, right? Next अगर हम देखें, the root is maleficent. Now maleficent actually comes from malice, which is bad, and facio is to do or make. So maleficent is something done bad with someone, or a person who does bad. So maleficent is an adjective form, which means something bad in nature, or it can be a person as well, a bad person or an evil person. Maladroit comes from malice and adroit. Adroit is skillful. When you add malice to it, जब आप adroit के आगे malice लगाते हो तो unskilled बन जाता है. Someone who is unskilled can be called maladroit. Anadi is one of the meanings of maladroit. Next is malady. Malady is some problem of serious nature. For example, nation's malady. मैंने अभी आपको example दिया था. Nation's maladies can be attributed to the thinking that people carry. So maladies are problems. So nation's problems can be assigned to the thinking that its citizens carry. So malady is problems. Malaise is bodily discomfort. अब अगर आप देखें malady and malaise दोनों में mal एक छोटा सा रूट आ रहा है जो कि malice से ही आया है. So कहीं पर भी आप mal अगर ऐड कर दे किसी भी वर्ड के आगे तो वो वर्ड जो है ऑटोमेटिकली नेगेटिव कोनोटेशन में आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन. अब यहां पे अगर आप mal ऐड कर दें, it becomes malnutrition. अगर adjusted or someone who's at ease can be called sitting at ease, but then if we add mal to it, it becomes maladjusted. Someone who is not seated properly, or someone who's facing or who's suffering from bodily discomfort. So malaise is bodily discomfort. Next is malediction. Now malediction actually comes from malice and deco. Deco is to speak. And मैं आपको बताऊं, deco के साथ अगर मैंने mal add कर दिया, it becomes malediction, which becomes curses. And वैसे ही अगर deco के साथ मैंने bene add कर दिया, it becomes benedictions, which means bene का मतलब होता है good. So benedictions का मतलब होगा blessings. So deco is to speak, malice is bad. So to speak bad, most probably curses. And अगर यहाँ पे दो words और देखें, first is malicious. Now malicious comes from malice. Malice is evil intent for somebody. वहीं से adjective form आया है इसका malicious. Malicious is a person who's carrying malice in his heart. Malevolent comes from malice and volo. Volo is to wish or desire. So malevolent is someone who wishes or desires something bad for others.
So that was one set of words from malice. Look, next, let's look at the second set of words, which begins from militate. Now, militate means to work to the disadvantage of something. It usually means to prevent from or to discourage something. So दो जो इसके synonyms है, 3 synonyms है इनफैक्ट, resist, discourage, oppose. इसका एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. Corruption is militating against the good work done by government. Government अच्छा काम कर रही है, but then corruption is actually opposing the good work. So corruption is militating against the good work done by government. So you must have understood the meaning of militate. If you look at the second word, it's militia. Militia is basically an army that is raised from civilian population. Civilian से ही एक army raise की जाती है. That particular army is supplement to the to the actual army. So जब कभी भी ऐसा होता है, army is raised from civilians, and that particular army is called militia. If you look at the next word, it's military. I suppose आप सब लोग इसका meaning जानते हैं. Military is group of soldiers. Next is militant. Militant is a person who fights for a particular cause. Most probably हम लोग terrorists के लिए militant word use करते हैं. Why? Because they are fighting for a particular cause. That cause can be good or bad. That's a different part. That's a different matter altogether. But then militant is somebody who fights for a cause. So देखा आपने किस आसानी से हमने आज के ये words cover किए. I hope ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे एंड ये जो मेथड है ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हमने किए हैं, उनको एक बार वापस देखेंगे एंड जो भी ये रूट्स हमने अभी तक कवर किए हैं इन 5 सेशंस में, आप कोशिश करेंगे कि ये जो रूट्स हैं आप वर्ड्स में आइडेंटिफाई करें एंड उनका मीनिंग भी ढूंढें. सो विद दिस आई टेक योर लीव नाउ. थैंक यू फॉर योर टाइम. यू ऑल हैव अ वंडरफुल डे.